अगर ये नाजायज़ है तो जो कानून में सख्त कार्रवाई किसी आम शख्स के लिए रखी गई है वही कार्रवाई इसके लिए भी होनी चाहिए। एक चीज तो बिल्कुल जाहिर लग रही है कि आज भी पीटीआई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, इमरान खान को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। आप पिछले 1-1.5 माह की इमरान खान की मूवमेंट देख लें, किसी कोर्ट में जाता है तो उसके गार्ड्स कभी बैरियर हटा रहे हैं, आप लोगों ने वीडियोस पता नहीं देखी है नहीं देखी है, ज़बरदस्ती बैरियर हटा रहे हैं। कल भी इनके रहनुमा इलेक्शन कमीशन की गेट फलांग के जा रहे हैं, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। इनके फॉरेन मिनिस्टर साबिका शाह महमूद कुरैशी कभी पुलिस वालों से लड़ रहे हैं और तू में कर रहे हैं। मतलब किसी भी कानूनी मुल्क में जहाँ कानून लागू होता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, उस तरह इन लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट आज दिन तक जारी है। एक और बात जो कल ये इमरान खान ने खिताब में कहा कि जी मैं जा रहा हूँ कोर्ट में अपील के लिए, क्या जितने कोर्ट में बाकी चीज़ों में फैसलों में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा या इसके लिए बहुत जल्दी में फैसले आएंगे? और क्या वो फैसले जिस तरह बाकी सियासी लीडरों के लिए आए हैं उसी तरह होंगे या इसके लिए फिर इसको स्पेशल ट्रीटमेंट या लाडले वाला कोई बर्ताव रखा जाएगा? और ये पहला वाकयात नहीं है। इलेक्शन कमीशनों ने पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को नाअहल करार दिया है, बहुत सारे सियासतदानों के नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो रद्द हुए हैं, बहुत सारे सियासतदानों को पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है, वो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान नहीं दी है। ये जो कल हम टीवी पे सुन रहे थे, पीटीआई के वकला जो फरमा रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन को सजा देने का कोई इख्तियार नहीं है, मैं खुल के ये बात कहता हूं कि मैं किसी भी तबसरे में बैठने के लिए तैयार हूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि कितने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को 2018 के इलेक्शन में उनके फॉर्म रद्द किए गए, इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी, आरओज ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी, डीआरओज ने नहीं दी, हाई कोर्ट्स ने जो है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी, बोला जी आपने ये झूठ बोला, आपने फलां झूठ बोला। और वही फॉर्म्स जब इमरान खान के लिए जाते हैं अदालतों में तो फिर काफ़ी कोर्ट्स कह देती हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका ज़ाती ज़िंदगी है। ये कैसे इस मुल्क में हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कानून दूसरा हो और इमरान खान के लिए कानून दूसरा हो? या तो कानून में अगर तब्दीली करनी है कानून में तब्दीली कर लें आप। अगर इमरान खान को कोई आप रिलीफ देना चाहते हैं, अगर इमरान खान आज भी लाडला है तो कानून में तब्दीली कर दें ताकि इमरान खान को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी सियासत को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये नहीं हो सकता और ये मजीद इस तरह अब नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ इमरान खान के लिए तमाम कानून में नरमियां और बाकी लोगों के लिए दूसरा सलूक। हमने देखा कि इस मुल्क का सबसे पुराने में पुराना केस, इस मुल्क में सबसे बड़े में बड़ी ज्यादती, इस मुल्क के आइन के खालिक का केस, इस मुल्क को एटमी ताकत देने वाले का केस, इस मुल्क को I thank the government and people of Turkey for their generous and warm hospitality during this 12th session of OIC Information Ministers. Pakistan believes that the significance of OIC's efforts in combating disinformation in the post-truth era cannot be overemphasized. We reiterate our commitment to the principles and goals enshrined in the OIC 2025 Program of Action on Media and Public Diplomacy. The 2025 Program of Action on Media and Public Diplomacy. We are also committed to playing a critical role in ensuring capacity building and sharing of best practices within OIC member states. Excellencies, I would like to draw your attention to some of the major challenges faced by OIC member states and the role of media in addressing these challenges. Climate change is the biggest generational issue of our time. Recently, my country, Pakistan, has faced catastrophic and unprecedented climate-induced floods, causing massive loss of life, property and livelihood.
with over 1/3 of Pakistan's land underwater, more than 33 million people affected, over 1 million homes damaged, and over 500,000 people forced to move to relief camps. Climate-induced floods have resulted in losses estimated at $40 billion US. With the Prime Minister of Pakistan leading from the front, the government of Pakistan has undertaken extensive operations for relief, recovery, and rehabilitation in the flood-affected areas. We are grateful to the international community, in particular OIC countries, for their invaluable contributions to the flood relief efforts. I would like to especially highlight extensive and multi-pronged assistance given by the Republic of Turkey under the President Erdogan's leadership. The catastrophic floods in Pakistan are a perfect example of the climate injustice many countries face today. Many member states of OIC, like Pakistan and Nigeria recently, are amongst the most climate vulnerable countries in the world, even though our carbon emissions are negligible. Media in the OIC member states has a responsibility to highlight and underscore the importance of urgent, unified, and decisive action by the international community to combat climate change and enhance climate financing, geared to building the necessary resilience, especially in vulnerable development countries. Ladies and gentlemen, the abhorrent phenomena of Islamophobia is not abating. Personal choices and fundamental freedoms are being constrained by denying religio-cultural symbols of faith. In our region, South Asia, hate speech and hate crimes against Muslims remain a source of increasing concern. Despite our efforts to the contrary, there has been a constant rise manifested in mob lynching, pre-planned communal riots, and negative portrayal in electronic and social media in India. We must intensify our efforts to combat Islamophobia. As representative of the collective aspirations of Muslim Ummah, OIC is uniquely poised to lead this endeavor and must throw its full political and economic weight and clout in protecting the fundamental rights of Muslims and interests of Muslim minorities across the globe. In this respect, let me put forward a few observations and recommendations. Information colonialism has to be fought, and a new independent information regime has to be established. It is the deliberate use of instruments of information control that define perceptions about Islam and Muslims. Many Muslim countries now have independent media which has made inroads into people's mind about stereotyped image of Islam. But more needs to be done in terms of creating information synergies among the Muslim states. The Muslim states also have to look within and tackle those currents and trends at home that feed misperceptions about Islam and the Muslim societies. More democracy, more public participation, more inclusivity, and focus on freedom of speech that is culturally sensitive and internationally projectable should be our goal to tackle the motivated misrepresentation. We must fight fake news with real news, fight bots with real people's aspirations, and fight trolls with genuine polls. Laws are needed to identify and prosecute promoters of hate and deception. However, we must continue to uphold basic freedoms. We must capitalize on the momentum generated by the adoption of UN General Assembly resolution designating 15th March as International Day to Combat Islamophobia. We request the OIC Secretary General and the Chair to accord priority to appointment of the Special Envoy on Islamophobia as mandated by the Council of Foreign Ministers resolution in Islamabad.
Formation of an OIC-led panel of experts would be useful to advise the OIC in dealing with incidents of Islamophobia as well as providing the support to the victims of Islamophobia in the evolving landscape of cyberspace. Excellencies, Pakistan pays tribute to the steadfastness of the Kashmiri and Palestinian people and calls upon the media in member states to continue providing maximum coverage to the suffering and brave struggle of the Kashmiri and Palestinian people who continue to face relentless aggression and violations of basic rights at the hands of Indian and Israeli occupation forces. Media in the OIC geography must accord priority to highlighting the systematic violations and transgressions and inform as well as educate the world on the reality and the magnitude of ensuing human rights and humanitarian crisis in occupied territories. On its part, Pakistan has been consistently leading peace efforts in the region from the front. We hope that Pakistan's efforts for durable peace and long-term development in the region will be reciprocated. Ladies and gentlemen, the OIC members must also coordinate their efforts to use wide-ranging media tools and options for showcasing true image of Islam and its teaching, propagation of tolerance and peaceful coexistence, and rejection of extremism and terrorism. In this regard, I would like to put forward the following recommendations to this August House. We will establish strategic partnerships among media organizations